Good afternoon, everybody. How are you all? So, in the last lecture, we studied about what did we study about? We studied about different networks of communication, informal and formal channels. And today, what we are going to do is, so we are going to study two very important topics from the point of view of examination. Today, we are going to study effective communication, and we are going to study intrapersonal communication. So these two are very important topics for the exam. Effective communication especially is a very important topic. You will most probably get a question uh, from this topic in your exam. And otherwise also it's a very important topic to understand if we talk about communication, right? So let us get started. So what is effective communication? Effective communication क्या होता है? हमने जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें जब मैंने आपको समझाया था कि कम्युनिकेशन पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, आप ज़िंदगी के 2 घंटे लगा के कम्युनिकेशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं थियोरेटिकली, राइट? सो और उस टाइम भी हमने बात की थी कि किसी भी काम को करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है और एक ख़राब या ठीक ठाक एवरेज तरीका होता है। तो वही जो बहुत अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन को करने का, उसको इफ़ेक्टिवली करने का, वो हम आज पढ़ेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो क्या बातें हैं जिससे कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बनता है वो हम आज पढ़ेंगे, राइट? तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। वैसे तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा है, हमने बॉडी लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है वो पढ़ा है, पैरा लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस क्या होती हैं कम्युनिकेशन, वो पढ़ा है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट what makes a good message or what makes communication really effective, what are the things that make it effective, there are basically 7 things, 7 factors. ये जो model है of 7 principles of effective communication, that was given by Francis J. Burgeon. Now what are the 7 principles? Let us look at them. So first is completeness. कंप्लीटनेस का क्या मतलब हुआ? कंप्लीटनेस का मतलब है कि आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पेन या कॉपी या अपने लैपटॉप या फ़ोन में ये सेंटेंस लिखिए, देयर इज़ अ मीटिंग टुमारो। देयर इज़ अ सेंटेंस, देयर इज़ अ मीटिंग टुमारो। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कल एक मीटिंग है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये कंप्लीट है? मतलब जब मैं आपको बोल रही हूँ कि कल एक मीटिंग है, तो आपके दिमाग में सवाल नहीं उठ रहे कि क्या मीटिंग है, क्यों है, क्या हमें अटेंड करनी है, कितने बजे है, कहाँ है, क्या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर ही है, अगर नहीं अटेंड करें तो क्या होगा? तो मैंने जो सेंटेंस बोला that there is a meeting tomorrow, it doesn't sound like you tell me whether it sounds complete or not. आपको लगता है कि ये जो सेंटेंस है there is a meeting tomorrow, ये एक complete communication है? Just type a yes or no in the chat box. Right. So this is not complete information. If I just say a sentence that there's a meeting tomorrow, it's not complete information. Now compare it to another sentence. There is a meeting. There is a meeting on Monday at 10 a.m. in room number 13 in the university department to discuss the syllabus. All students have to attend it compulsorily. Now do you think the communication is complete?
I gave you this information that there is a meeting on Monday at 10 a.m. in room number 13 in the university department to discuss the syllabus, and all students have to attend compulsorily. Now do you think it's a complete message? Yes. So अगर हम completeness की बात करें तो कंप्लीटनेस का मतलब ये हुआ कि आपका जो मैसेज है, आपका जो कम्युनिकेशन है, वो अपने आप में इतना कंप्लीट होना चाहिए कि सामने वाले के मन में सवाल ना उठे, डाउट्स ना रहे और उसको अलग से आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा सवाल पूछने की ज़रूरत ना पड़े. If you have to measure the completeness of communication, you can ask the 5W questions. The 5W questions are what? जैसे कि मैंने जो सेंटेंस बोला कि देयर इज अ मीटिंग, तो क्या है? मीटिंग है. सो दैट आंसर्स योर व्हाट. देन व्हाई, क्यों है वो मीटिंग? मैंने बोला टू डिस्कस द सिलेबस, राइट? सो दैट आंसर्स योर व्हाई. व्हेन, कब है? मंडे को है, 10 बजे है, राइट? सो दैट आंसर्स योर व्हेन. कहाँ पर है? वेयर. इट्स इन दी it's in room number 13 in the university department, right? And who, यानी कि किस किस को आना है, and all students have to attend compulsorily, right? So जो first sentence था, there is a meeting tomorrow, it did not answer these 5W questions. जो second sentence था, there is a meeting on Monday at 10 a.m., it answered all the 5W questions, hence the second sentence was complete. So the first principle of effective communication is completeness. And how do you know whether your communication is complete? If it answers the 5W questions of what, why, when, where and who. तो इसका मतलब आपका जो मैसेज है या जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट, राइट? ओके. Now let us come to the second principle, that is conciseness. कंसाइजनेस का मतलब हुआ कि आपका जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए. जैसे सो माई ग्रैंड मदर सेज दिस थिंग दैट जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके बारे में, लाइक माई ग्रैंड मदर सेज दैट जब बात को कम शब्दों में बोला जा सके तो उसको कम शब्दों में ही बोलना चाहिए. यू नो, लाइक सेव योर वर्ड्स. यू शुड नॉट spend your words unnecessarily because it takes time and energy. So if your communication is concise, you would save on your time and energy and the other person's time and energy also. जैसे फॉर इंस्टेंस इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, मीटिंग वाला ही लेते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ कि कल 10 बजे मीटिंग है रूम नंबर 13 में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, सिलेबस को डिस्कस करने के लिए सारे स्टूडेंट्स को आना है. वैसे टीचर्स को नहीं आना है, सिर्फ स्टूडेंट्स को ही आना है. और आधे स्टूडेंट्स आए तो नहीं चलेगा, सारे ही स्टूडेंट्स को आना है क्योंकि वो कंपलसरी है. ना मैंने जो लास्ट में 2 लाइनें ऐड करी, क्या उनकी ज़रूरत थी इस मैसेज में? इस टाइप येस और नो इन द चैट बॉक्स. जो लास्ट की 2 लाइनें थी, क्या आपको लगा कि उनकी जो लास्ट की 2 लाइनें थी, क्या आपको लगा कि उनकी ज़रूरत थी बोलने की? नो, राइट? सो बेसिकली व्हाट आई डिड जस्ट हियर वाज दैट माय कम्युनिकेशन वाज नॉट कंसाइज. उसकी जगह अगर मैं ये सिर्फ बोलूँ कि कल मीटिंग है 10 बजे रूम नंबर 13 में, सभी को आना है, सारे स्टूडेंट्स को, तो दैट इज़ कंसाइज, दैट इज़ शॉर्ट, दैट इज़ ब्रीफ. उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कम शब्दों में छोटे स्पेस में बोला गया है, राइट? So it leads to a lot of clarity. It does not create a lot of confusion, or it does not waste time or energy. So the second principle of effective communication is that your communication or your message should be concise. Now the third principle is clarity. आपका जो communication है उसमें clarity होनी चाहिए. किस चीज़ की clarity? See,
हमने जब कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि इससे पहले कि मैसेज शब्दों में फॉर्मुलेट हो, वो सबसे पहले सेंडर के माइंड में फॉर्मुलेट होता है। तो अगर मैसेज में क्लैरिटी चाहिए तो सेंडर के जो थॉट्स हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर एक्सप्रेशन पुअर होता है तो उससे सिमेंटिक बैरियर्स आते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। सो बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें थॉट में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या बोलना है या आप खुद कंफ्यूज है, तो अगर कोई इंसान खुद बहुत कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेके, आपको लगता है कि वो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन कर पाएगा किसी से? नो, राइट? अगर किसी के थॉट में बहुत क्लैरिटी है लेकिन उसके एक्सप्रेशन में क्लैरिटी नहीं है, मतलब वो जो बोलना चाह रहा है उसको पता है वो क्या बोलना चाह रहा है लेकिन वो समझा नहीं पा रहा अपनी बात, वो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। सो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड क्लैरिटी मीन्स क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे उसी मीटिंग वाले एग्जाम्पल से इस क्लैरिटी वाले पॉइंट को दोबारा समझते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि कल शायद से मीटिंग है बट आई एम नॉट वेरी श्योर, एंड यू नो लाइक यू शुड कंफर्म इट फ्रॉम द डिपार्टमेंट वंस, एंड आई थिंक 10 बजे है बट इट मे बी गॉट rescheduled to 10:30, and I don't know where the meeting is. It's maybe like somewhere in the department. तो मैंने आपको जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी आपको और अपना टाइम खराब किया, उससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली? लाइक डिड यू रियली अंडरस्टैंड कि मीटिंग है या नहीं है और कहाँ है और कितने बजे है? You did not, right? Why? Because despite the fact that I was communicating, my communication had no clarity. I wasn't sure of the things myself, hence my communication lacked clarity. So the third principle of effective communication is clarity. Now the fourth principle is correctness. करेक्टनेस का मतलब होता है कि आपका कम्युनिकेशन करेक्ट होना चाहिए। किन किन चीज़ों में करेक्ट होना चाहिए? आप जिस भी भाषा में बोल रहे हैं, अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो सही हिंदी, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो सही इंग्लिश, आपकी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए, आपका एक्सेंट और डायलेक्ट अपनी ऑडियंस के हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, राइट? सो only then your message is correct in everything, in terms of language, in terms of grammar, in terms of pronunciation, in terms of its accuracy, then only the communication is going to be effective. The fifth principle of communication is concreteness. Now concreteness का क्या मतलब होता है? Concreteness का मतलब होता है, concreteness is another side of clarity. You know, concreteness is another type of clarity. Concrete means कि आपका जो मैसेज है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब इधर उधर की इंफॉर्मेशन नहीं, बहुत अननेसेसरी डिटेल्स नहीं, पर्टिकुलर होना चाहिए। आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर एजेंडा को माइंड में रख के कर रहे हैं, राइट? अगर आपको किसी से हंसी मजाक करना है तो आपका एजेंडा है टू हैव फन, अगर आपको किसी को पढ़ाना है तो आपका एजेंडा है टू गिव अ गुड लेक्चर। सो योर कम्युनिकेशन शुड बी पर्टिकुलर, इट शुड बी डेफिनेट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है या आप क्या बोल रहे हैं। इट शुड बी क्लियर, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और विविड होना चाहिए। हमने बात की थी कि कम शब्दों में बात करना हमेशा अच्छा रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको माइनस कर दें, राइट? सो योर मैसेज शुड बी वेरी कॉन्क्रीट। जैसे आपने अगर नोटिस किया हो तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपने सेंटेंसेस में आई डोंट नो या पता नहीं ऐड करने की आदत होती है। ये जैसे आई डू दिस अ लॉट ऑफ आई एम जनरली अ वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम, so I have this habit that I talk to people about something and you know I get confused and then I end up saying पता नहीं, या I end up saying let's see, देखते हैं, you know?
So these are very vague terms. तो जब आप ये वेग टर्म्स अपने कम्युनिकेशन में डाल देते हैं तो आपका कम्युनिकेशन कॉन्क्रीट नहीं रहता, वो वेग हो जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है. इट्स नॉट वेरी वेरी क्लियर एंड इट्स नॉट ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव. जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स से आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ यू आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट योर करियर और लाइफ में आगे क्या करना है, राइट? आई एम ऑल्सो वेरी कंफ्यूज्ड, सो आई गेट यू. बट if you have like a career related conversation with your parents or with your friends and if you're not very sure, so you tend to have very non-concrete, very vague conversations. कोई पूछेगा कि आपका पैशन क्या है, नहीं लाइक कि मुझे यही अच्छा लगता है पर पता नहीं है मेरा पैशन क्या है. कोई पूछेगा कि अच्छा पैसे कैसे कमाने हैं, तो नहीं कि लाइक कि क्या देखते हैं तो सरकारी नौकरी अच्छी होती थी, बट अब तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट ऑल्सो, राइट? सो लाइक when you include vague terms and when you include abstract language in your communication, it becomes less concrete. So that's not very effective. So the fifth principle of communication is concreteness. The sixth principle, that is consideration, is a very important principle in communication. Why? Because consideration tells you to be kind, right? See, you can be the best communicator on the planet, you can be the best orator on the planet, you can have amazing vocabulary, you can be extremely fluent, but if you're not kind while talking to people, if you're not kind while listening to people, if you're not considerate of their feelings, of their background, of who they are, and what they might feel if you say something, then you know what's the point of being a good communicator if you cannot be kind, if you cannot be a kind communicator. So I feel that being a kind communicator is much more important than being a great communicator. So why is consideration an important principle of effective communication? See, आप जब भी किसी से बात करें तो आपको आपका जो सोच है वो ये होना चाहिए कि मैं जो सामने वाले से बात कर रहा हूँ, सामने वाले को कितना समझ आ रहा है, सामने वाले का जो बैकग्राउंड है, उसकी जो नीड है, उसका जो इंटरेस्ट है, क्या मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ. जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स से I talk to someone who is very poor, okay, who does not belong to a very rich family, and I start telling them about these expensive brands or these expensive policies कि आप ये 5-6 लाख की पॉलिसी ले लो तो ये हो जाएगा. They will not really they will not feel good, they will not be interested, they will not feel the need of this conversation because they do not, what I'm talking is not relevant to them, right? So how can you be considerate while communicating? You can be considerate by analyzing, by keeping in mind the need and the interest of the receiver. You can also look at the receiver's socio-psychological background. Socio-psychological background का मतलब वो कौन से social background से आते हैं, वो कौन से psychological background से आते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस so you know like अगर कोई like if someone is really sad, if someone like this happened with me, so my father was very ill sometime back, and you know there were a few friends who kept giving advice कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, इस डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उस डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. बट आई वॉज वेरी सैड एट दैट टाइम, राइट? आई वॉज जस्ट नॉट इन अ मूड और इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू लिसन टू देयर एडवाइस. Maybe a better thing would have been to not give advice, but you know, give empathy, give sympathy कि सब ठीक हो जाएगा, या फिर you know like just have courage, you'll get the right doctors. So what I'm trying to say is that you can be more considerate by keeping in mind the receiver's social psychological background.
उनकी प्रीवियस नॉलेज, ये चीज़ मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी कि बैकग्राउंड नॉलेज क्या है रिसीवर की, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। एज आई गिव यू एन एग्जाम्पल यस्टरडे कि आपने कभी ज़िंदगी में शेक्सपियर नहीं पढ़ा है और मैं आपको शेक्सपियर की तारीफ़ों के पुल बांधना स्टार्ट कर दूँ तो आपको नहीं समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, बिकॉज यू डोंट हैव द प्रीवियस नॉलेज ऑफ इट. So you can be more considerate by keeping the receiver and the receivers need interest and social psychological background, their previous knowledge or their state of emotion in mind, right? Like I have another example. So this happened last year uh, when COVID was not there. So I went to a restaurant and वहाँ पे एक अंकल आए और वो अपना ऑर्डर जो है वो वेटर उसको इंग्लिश में देने लगे. नाउ द वेटर डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ही न्यू ओनली हिंदी. सो आफ्टर repeating the order 2-3 times when the waiter could not understand English में वो जो order था, तो the uncle started shouting at the waiter कि तुम गधे हो, तुम्हें तो समझ नहीं आता, मैं 2 बार बोल चुका हूँ. इससे अच्छा ये होता कि वो अंकल जज कर लेते कि उसको वेटर को इंग्लिश नहीं आती है, थोड़े कंसिडरेट होते अपने कम्युनिकेशन में और उसको हिंदी में ऑर्डर देते तो प्रॉब्लम नहीं आती, राइट. So my entire point is that consideration is a very important principle of effective communication, right? Okay. Now the last principle is courtesy. Courtesy means politeness or like a friendly attitude. तो जब भी आप बात करें तो पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है. I don't know how many, like I don't know what you feel about this specific thing, but Delhi people are very infamous. Like दिल्ली के लोग बहुत बदनाम होते हैं of not being courteous in their communication. उनके बारे में तो बोला जाता है कि वो नहीं तमीज़ से नहीं बात करते. So courtesy is a very important principle of communication. Whenever you talk, it's important that you are polite, you are friendly, and you are helpful. No? कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है और आपको रास्ता पता है लेकिन फिर भी आप बोल दे कि नहीं मुझे नहीं पता. Like don't do that. अगर रास्ता पता है तो बताएं. So like you know these soft skills, लोगों को लगता है कि अरे हमें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी, हम बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे और हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक ठाक होगा तो हम बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे. बट लैंग्वेज फ्लुएंसी ये सारे हार्ड स्किल्स हैं, ये आप किताबें पढ़ के सीख सकते हैं. बट देन यू ऑल्सो नीड सॉफ्ट स्किल्स कि जो आपको लैंग्वेज का ज्ञान है उस लैंग्वेज को किस लिए यूज़ करना है, किसी को भड़काने के लिए या किसी को समझाने के लिए. जो आपको फ्लुएंसी आती है उसको कैसे चैनलाइज करना है. नो, these soft skills are what actually makes you a good communicator. How courteous you are, how considerate you are, how empathetic you are, how kind in your words you are. It's very important to use kind words. That's why we keep saying that say sorry a lot, say thank you a lot, listen first and then talk. So these are all soft skills which you need to learn, and they can be learned, right? You can always learn how to be more polite, you can always learn how to be more considerate, you can also always learn how to be more kind while talking to people. So these are some principles of effective communication. Let's give them a quick revision. Completeness, conciseness, clarity, correctness, concreteness, consideration, and courtesy, right? बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बोला. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉपर यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज पढ़ा था कि जब आप बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, राइट. जब आप सही तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं
जब बहुत ज़्यादा आप टेक्निकल वर्ड्स या बहुत ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं, आप एक्यूरेसी होती है, प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है, then your communication is more effective. Feedback is a very important part of effective communication. Participative listening. So listening is a very important point in communication that is very, I feel, is very underrated. लोग को लगता है communication का मतलब है बात करना. Communication का मतलब बात करना है, लेकिन बात करने से पहले बात सुनना ज़्यादा important है. बात सुनना is a more important part of communication than बात करना, right? If you're not a good listener, you will probably not be a good communicator. So it's very important to listen. Why? Because जब आप सुनते हैं तो सामने वाले को पता लगता है कि हाँ आपको उससे बात करने में इंटरेस्ट है, और जब आप सुनते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन आगे बढ़ा पाते हैं. सेल्फ कंट्रोल is surprisingly a very important part of communication. बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आपसे बहुत सवाल पूछ रहा हो तो आप इरिटेट हो जाते हैं, या कोई बहुत टाइम ले रहा हो कोई चीज़ बोलने में तो आप इरिटेट हो जाते हैं. तो द की हियर इज़ नॉट टू लूज कंट्रोल, हैव पेशेंस, keep your temper in control while talking and or listening, and be a good communicator, right? Planning and openness of mind are also very important factors in effective communication. Planning, as in you have to plan your message. So for instance, if I don't plan this lecture, if I don't go topic by topic, if I don't go unit by unit, अगर हम यहाँ पे सिर्फ गपशप करें, अगर हम यहाँ पे सिर्फ I give you random, like my examples are very planned. If I don't plan my examples, maybe my teaching will not be that effective, my communication will not be that effective. Openness of mind is important. Why? Because communication is all about exchanging new ideas, right? अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई आपको ये बोलता है कि एक काम करो, आज से अगर आप दिन में 2 बार रोटी खाते हैं तो सिर्फ 1 बार रोटी खाएं और सब्जी ज़्यादा खाएं, एंड यू जस्ट डोंट लिसन टू देम, यू डोंट कीप एन ओपन माइंड एंड यू लाइक कि अरे मैंने तो बचपन से रोटी खाई है, सब रोटी खाते हैं, उसको वेट लूज़ करने के लिए रोटी खाना कम करने की क्या ज़रूरत है. सो कम्युनिकेशन विल नॉट हैपन देयर. वो जो बात कह रहा है इंसान वो डिस्करेज हो जाएगा, आप उसकी बात सुनेंगे नहीं, नो कम्युनिकेशन विल हैपन फर्दर. सो and open, like people not keeping an open mind while communicating is probably the biggest barrier to communication. People fight, people don't understand each other, your relationship goes sour, you lose your friendship, you lose out on good time with your parents, you don't have great professional relationships if you are not open-minded, if you're not open to new ideas and open to new days and new topics of conversation. So openness of mind is also very, very important. Now let us come to the 3M approach. So see, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये 2 टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. ये जो मैंने आपको बाकी फैक्टर्स पढ़ाए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 7 पॉइंट हैं, द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इनको बोलते हैं, द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, these are very important, so pay special attention to them. And the 3M approach is also very important. Now what's the 3M approach? 3M अप्रोच का मतलब कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में 3M इन्वॉल्व होते हैं. M से माइंड, यानी कि माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में. वाई? बिकॉज जो आपका मैसेज है, जो आपके कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है, वो आपके माइंड में ही ओरिजिनेट होता है. मैसेज सेंडर के माइंड में ओरिजिनेट होता है, रिसीवर के माइंड में डिकोड होता है. सो your mind plays a very important role in communication, not only because of encoding and decoding, but also because of psychological barriers, also because जो भी receptivity है communication की, वो आपके mind में ही originate होती है, right?
सेकेंड एम इज मीडियम. मीडियम मतलब आप जो तरीका यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने का या जो चैनल यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने का. तो जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं यही लेक्चर आपको वीडियो ऑफ करके दूँ तो आपको कम समझ में आएगा, बिकॉज यू कैन नॉट सी माई फेस एक्सप्रेशन, यू कैन नॉट सी माई बॉडी लैंग्वेज. But because we are using the video, that is why communication is more effective. So that is the medium, right? That is where medium plays an important role. The third is the message. Again, as I said, that message is the foundation of your communication. What is message? Message जो भी information, idea या emotion आप transmit कर रहे हैं, that is your message. Message, as you know, verbal भी हो सकता है, non-verbal भी हो सकता है. So message is like the body of communication. अगर आपके पास कुछ सुनने के लिए नहीं होगा तो आप कहेंगे क्या? So message is very important. So these are the 3 M's which are very important for effective communication. So with this we have completed a very important topic, that is effective communication. यहाँ तक जो हमने अभी पढ़ा effective communication के बारे में, the 7 C's of communication, other factors of effective communication and the 3M approach. अगर किसी को भी डाउट है तो पूछें इसमें. I'll give you 3 minutes to ask your doubts. अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो पूछें, and then we'll move on to the next very important topic. What is C? 7 C है ना, like the first, second, third, fourth, fifth, sixth and 7th C. So the 7th C of C's of communication. All right, I don't see any doubts related to this unit, so we will move on. So our next topic is intrapersonal communication. It's a very small topic. बहुत easy भी है और बहुत important भी है, right? So all right, let us understand कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है. मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि कम्युनिकेशन को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. एक होता है इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल इज, इंट्रा मीन्स अंदरूनी, लाइक आपस में. एक होता है इंटर. इंटर मीन्स बिटवीन 2 और मोर देन 2 entities or people. So what is intrapersonal communication? Basically, roughly speaking, intrapersonal communication is जब आप खुद से बातें करते हैं. So that is intrapersonal communication. What is interpersonal communication? Interpersonal communication is जब दो लोग आपस में बात करते हैं या दो लोगों से ज़्यादा आपस में बात करते हैं. So that is in. So you can see this. कम्युनिकेशन का एक जो क्लासिफिकेशन है वो ये भी है. वन इज इंट्रा एंड वन इज इंटर. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो अक्सर खुद से बातें करते हैं. लाइक यू हैव दिस हैबिट ऑफ टॉकिंग टू योरसेल्फ. Just type me, me in the chat box if you talk to yourself. Like I definitely talk to myself all the time, like all the time. Yeah, I know, right? I don't know. It's a lot of fun. So basically, see, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है खुद से बातें करना, एंड अगर कोई सुनेगा तो वो पागल भी बोलेगा. I think it's great, like talking to yourself. Now, why do people talk to themselves, or what is the need for intrapersonal communication? See, there can be so many situations and there can be so many scenarios in which people feel the need to talk to themselves. तो जब आप सोचते हैं तो आप अपने दिमाग में खुद ही में सोचते हैं, राइट? जब वो थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर आप
जैसे like when I'm very confused about what are like I have 20 things to do and I'm not able to organize them, I talk to myself कि अच्छा ये करना है, फिर 3 बजे ये करना है, फिर उसके बाद वो करना है, right? So that is how like I self organize things in my own brain by speaking them out aloud and talking to myself. Or usually, like I don't know why other people do that. I'm just telling you why I do a lot of intrapersonal communication. I am a very anxious person, so I feel whenever I feel very anxious, I just talk to myself कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं सब हो जाएगा, it's okay, हो जाएगी क्लास, अगर अभी नहीं स्टार्ट हुई है तो 10 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी, it's okay. Whenever I feel nervous or I feel anxious or underconfident before an interview or before a class, I give myself a pep talk. I talk to myself. बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू की प्रेपरेशन करते हैं या किसी मीटिंग की प्रेपरेशन करते हैं तो वो शीशे में देख कर प्रेपरेशन करते हैं. A lot of actors do that, especially when they are preparing for a scene. They talk to themselves in the mirror. Um, there is this great technique of uh, speaking out affirmations out loud to make yourself feel more confident. Like I was watching this interview of Anil Kapoor, and he said that before every scene, every big scene, he used to look in the mirror. He used to look at his own reflection and he used to tell himself that you are fantastic, you're awesome, you are an amazing actor, right? So सुनने में थोड़ा और लगता है, but surprisingly intrapersonal communication is very effective, very useful, and very widely used by people for different psychological purposes. In fact, literature में भी इसका बहुत use है. You can think of it as self-talk, right? जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं या जितने भी सेल्फ हेल्प गुरुज हैं वो अक्सर बोलते हैं कि जब भी आप नर्वस हैं या जब भी आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो खुद को एक पेप टॉक दें, राइट? सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. So interpersonal communication can be classified into two categories. One is soliloquy and one is monologue. ये जो शब्द है SOLILOQUIE, the pronunciation is soliloquies, and इस नीचे वाले का pronunciation is monologues. So now soliloquies and monologues are very similar, but इसमें कुछ difference होता है. क्या difference होता है वो हम देखते हैं. Soliloquy is basically जब कोई कैरेक्टर, अच्छा आप में से कितने लोगों ने शेक्सपियर के प्लेस पढ़े हैं या शेक्सपियर के प्लेस देखे हैं परफॉर्म होते हुए या सुने हैं? How many of you have read Shakespeare's plays? How many just type a yes? And how many of you have not ever read a Shakespeare play? Just type a no. I'm assuming you all are English honors students. I may be wrong. If you all are English honors students, you must have read Shakespeare. So अगर आपने हैमलेट पढ़ा है या अगर आपने शेक्सपियर का कोई भी प्ले पढ़ा है तो सोलिलोक्वी और मोनोलॉग शेक्सपियर के प्लेज में एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है. सोलिलोक्वी क्या होता है? सोलिलोक्वी में एक कैरेक्टर जो है एक स्टेज पे खड़े होकर एक लंबी स्पीच देता है. वो अपने थॉट्स खुद ही को मतलब अलाउड, he is speaking his thoughts aloud to himself, और वो तब सोलिलोक्वी बोलता है जब ऑडियंस के अलावा स्टेज पे और कोई भी नहीं होता. यूजुअली इससे सोलिलोक्वी एक ऐसा डिवाइस है जिससे कैरेक्टर का जो मेंटल स्टेट है वो पता लगता है बिना किसी डायलॉग के. तो इसमें हैमलेट में बहुत सारी सोलिलोक्वीज हैं. देयर इज दिस फेमस सोलिलोक्वी, टू बी और नॉट टू बी. If you ever read that, it's a great play.
So solidity is basically what? Solidity तब होती है जब एक कैरेक्टर स्टेज पे खड़े होके खुद से कुछ बोल रहा होता है और वहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ ऑडियंस होती है जो उसकी बात सुन रही होती है, राइट? नाउ व्हाट इज अ मोनोलॉग? Dialogue is a conversation between two people. Monologue is a conversation with one person, that is, yourself. So monologue में क्या होता है? मोनोलॉग में कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर से बात नहीं कर रहा होता, पर कोई दूसरा कैरेक्टर स्टेज पे होता है जिसको वो अपनी मन की दशा या अपनी बात सुना रहा होता है. सो बेसिकली students get really confused between solidity and monologue. The difference is solidity में सिर्फ ऑडियंस होती है, कोई और कैरेक्टर नहीं होता स्टेज पे. मोनोलॉग में एक और कैरेक्टर होता है स्टेज पे और वो जो कैरेक्टर मोनोलॉग कर रहा है उसकी बात सुन रहा होता है. So solidity and monologue are very important devices that Shakespeare usually uses. यहाँ पे एक डिफरेंस दे भी रखा है. सॉलिडिटी में कोई और कैरेक्टर नहीं होता. सॉलिडिटी कैरेक्टर सिर्फ अपने लिए बोलता है. मोनोलॉग में दूसरे कैरेक्टर्स बात सुन रहे होते हैं और वो दूसरे कैरेक्टर की तरफ डायरेक्टेड होता है वो मोनोलॉग, राइट? दिस इज हाउ वी आर डन विद इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. हो सकता है कि आपको वो किसी प्ले का एक्सर्प्ट दे दें या कोई पैसेज दे दें एग्जाम में और फिर पूछें कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंट्रापर्सनल है कि इंटरपर्सनल है. So you need to know the intrapersonal and interpersonal communication क्या होता है. Alright, so what we are going to do is we are going to take a break. Right now it's 4:10. We are going to meet again at let's take a 15-minute break. Let's take a 15-minute break. Drink water, eat, what have you, and let's meet at 4:25. Okay? And if you have any doubts in the meantime, just type them in the chat box. I'll come and back and answer them. Alright everybody, let's come back. So we are going to start a new topic and an important one. And that is interpersonal communication. जैसे कि मैंने बताया कि कम्युनिकेशन को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. एक है आपका इंटरपर्सनल, जो हमने अभी पढ़ा, और एक होता है आपका इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल मतलब जब एक से ज़्यादा लोग बात करते हैं, यानी कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या एक इंसान हज़ारों लोगों से बात कर रहा है, या दो से ज़्यादा लोग आपस में ग्रुप बना के बात कर रहे हैं. मतलब जब भी एक से ज़्यादा इंसान बात करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट? नाउ again, interpersonal communication can also be classified into like subtypes. One is one-on-one communication. One-on-one communication is when one person talks to another. Like we talk one-on-one. जब दो लोग आपस में बात करते हैं, that is one-on-one communication. Now, one-on-one communication can be of different types. One is face-to-face communication that you might do in a meeting or in a classroom, or when you talk to your friend face-to-face in person, right? One-to-one communication can also be telephonic, where two people are talking on the telephone. It can be an interview where two people are giving or taking interview. It can be an instruction when someone is maybe teaching, like जैसे ट्यूशन में होता है कि एक ट्यूटर किसी एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, राइट? Or it can be a dictation where one authority is dictating कि उसके सबऑर्डिनेट को या सामने वाले को क्या करना है, राइट? सो बेसिकली interpersonal communication के सब टाइप्स होते हैं. One is this is like fairly simple.
इंट्रापर्सनल थोड़ा सा ट्रिकी था, but interpersonal is fairly simple. It's basic information that we all know about. So as I said, the first classification is one-on-one communication. The second is group communication. So group communication can also be, called mass communication. एक तो होता है कि लोग झुंड बना के आपस में बात करते हैं, लाइक अ स्मॉल ग्रुप. जैसे सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि मोहल्ले के जितने भी अंकल होते हैं वो सब एक झुंड बना के धूप सेकने के लिए बैठ जाते हैं. देन वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स. So that's small group communication, right? Large group or public communication is, maybe you can say, in a classroom when classmates are talking to each other, that can be a large group communication. Or like a public communication where one person, जैसे कोई भी politician अपनी रैली में जब भाषण देता है, तो that's public communication. Mass communication is basically, mass stands for masses, which means जनता. So जब बहुत लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है एक वाइड जोग्राफिकल एरिया में फैली हुई ऑडियंस को, सो उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं. सो न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, टीवी, मूवी थिएटर्स, radio, news channels, they can all be examples of mass communication. Now comes the interesting part, that is extra-personal communication. So, what is extra-personal communication? See, we communicate not only with human beings, but with non-living things. Like, when I say non-living things, I mean things that are not human beings also, right? अच्छा, आप में से कितने लोगों के पास पेट है? कोई घर में डॉग या कैट, और आप उससे ऐसे मतलब प्यार भरी बातें करते हैं अपने पेट से. How many of you have a pet and talk to your pet? Or how many of you talk to the stray dogs in the street? I don't know how many of you do this, but I temporarily used to have a pet. I'm not a dog person. I like cats. So I used to have a cat, and I used to talk to her a lot, like especially when I had anxiety, and that really helps, talking to an animal. And like not only that so only specifically people with pets can relate to, but see, it sounds a little odd, like this whole concept of talking with non-human beings. It does sound odd, but if you really think about it, हम रोज कम से कम दिन में 5 से 6 बार नॉन लिविंग थिंग्स से बात करते हैं. It's a blessing that they don't talk back to us, but TV अगर नहीं चल रहा होता है, टीवी का रिमोट नहीं काम कर रहा होता है, तो वी से थिंग्स लाइक चल जा यार, या फिर फ़ोन अगर ख़राब हो जाता है या फ़ोन गिर जाता है, मे बी लाइक यू से समथिंग टू योर फ़ोन, you like very interestingly, it's a proven fact that plants understand communication. So there was this lady who used to live next to us, and she had a very beautiful garden. She had all kinds of plants, and every morning she would get up, water her plants, and talk to her plants. Like for आधा घंटा she used to talk to her plants. And I was a child, so I did not understand. Like I used to think that she's crazy. Why is she talking to her plants? Plants cannot understand what we talk about. But later, when I grew up, I read a lot of researches on how plants can actually feel emotions, and plants can also understand communication. So the lady used to say that वो जब अपने plants से बात करती हैं बहुत प्यार से, तो वो plants बहुत अच्छे से grow करते हैं. So I now am a complete believer in this fact that non-human beings, especially animals and plants, do understand. Definitely do understand
um, communication. I'll give you another example. So, my friend told me the story. She used to have a dog. How many of you have dogs? Dogs are special. Dogs are great communicators. Dogs are great communicators, especially great listeners. That is why dogs are really good, make really good pets. Because आप रोएंगे तो ना तो आपके दोस्त सुनेंगे, ना तो आपके पेरेंट्स सुनेंगे, ना तो आपके टीचर्स सुनेंगे, बट आपका पेट, आपका डॉग सुनेगा. तो my friend used to have a dog, and she was playing with him, and उस like dog ने नाखून मार दिया गलती से. उसके बहुत तेज लग गई, फ्रेंड के बहुत तेज लग गई. So friend ने गुस्से में उसको काफ़ी कुछ सुना दिया, that go away, don't talk to me, and don't show me your face again. And the dog felt so bad and he felt so guilty that he went to the terrace and उसने अपने सारे नाखून घिस लिए, like दीवार पे पंजा मार मार के. It must have been very painful for the dog, but even though dogs don't like, we know that a dog cannot understand the language that we are talking um in, but they do understand our communication. You don't always need a language to communicate. So these are examples, like when you talk to animals, when you talk to plants, when you talk to non-living things, or like a non-human entity, that is extra personal communication. Yeah, like so many little examples, like आपके पास पेट है तो जब आप घर वापस आते हैं तो वो पेट रिएक्ट करता है. जब आप लाइक डॉग्स जब खुश होते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाते हैं. लाइक लिटिल थिंग्स, लिटिल वेज इन विच नॉन ह्यूमन थिंग्स talk to us and communicate with us. So this is extra personal communication. So with this, today we have covered inter and extra personal communication. We covered effective communication and the pre-in approach and other factors which lead to effective communication. Let me see if we can take one more topic. I don't think we have time to start a new topic. So we are going to just, revise these topics for today. And so I am now opening the floor for doubts. Let's have a doubt session. जो भी doubt है आपको पूछिए. Ankita, the notes are available in the WhatsApp group, as I mentioned yesterday. If you can please, if whoever is the admin of the WhatsApp group can please send the invite link. Does anybody have the link to the WhatsApp group? I can maybe post it here. No, Neha, you got it wrong. Intrapersonal. Intrapersonal is when you talk to yourself. Interpersonal is when you talk with other people. Extrapersonal is when you talk with animals or non-human beings. Someone has a very interesting question. Can it be considered that we are communicating to non-human beings if we talk to God? I don't think it, Preeti, I don't think that has any right answers. It completely depends on what you think. I think it depends on what you believe in. Someone is asking what is organizational communication. Organizational communication is the kind of communication that happens within an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कम्युनिकेशन होते हैं. So that is organizational communication. For people who don't use WhatsApp, you will also get the notes here in a day or two. Like you'll get the notes in WhatsApp, in Microsoft Teams. Someone has asked an interesting question, that can Google replace teachers? Even Google has everything, but the lack of communication is the reason why it's not succeed. I don't think Google has everything. Google can give you information, Google cannot teach you. अगर ऐसा होता तो सब बहुत बड़े ज्ञानी बन चुके थे हमारी जनरेशन में. तो आपको लगता है आप ज्ञानी हैं? Someone is asking what is kinetics. Kinetics is the study
is the field which studies body language. जो फील्ड ये स्टडी करती है कि बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन से क्या रिलेशनशिप है, दैट इज काइनेसिक्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So yeah, Riddhi has should be able to see it. I have published it. If you go in the chat box and if you click that publish, you'll get the. Yes, Neha, soliloquy and dialogue is different. डाया का मतलब टू होता है, राइट. तो डायलॉग इज जब एक से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, दैट्स अ डायलॉग. सोलिलोक्वी इज intrapersonal, dialogue is interpersonal. I see students getting confused between intra and interpersonal communication. There is a very basic difference. मतलब बहुत जमीन आसमान का फर्क है इंटर और इंट्रा में. इंटर मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बीच में. इंटर मतलब only one person is communicating, right? जब so if I have to explain it very simply and very crudely, जब आप खुद से बात करते हैं that is intrapersonal. जब आप दूसरों से बात करते हैं that is interpersonal. Like you can write it somewhere for your understanding. You have like I'll give you 2-3 more minutes and then we'll end the session to ask your doubts. जो भी doubt है वो पूछें. Someone is asking the difference between public space and social space. Public space में जितनी भी जनता है, जितनी भी पब्लिक है, वो आ सकती है. एज इन बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जब आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ योर पब्लिक स्पेस. मेट्रो में आपके बगल में कौन है, आप कौन बैठा है, क्या आप उसका नाम जानते हैं, क्या आप उसको पर्सनली जानते हैं, क्या वो आपके सोशल सर्कल में है? नहीं, वो कोई एक अनजान व्यक्ति है जो सिर्फ आपके साथ एक सीट शेयर कर रहे हैं. सो दैट इज़ योर पब्लिक स्पेस. सोशल स्पेस में आपके दोस्त और आपके नेबर्स आ जाते हैं, यानी कि जो सोशल आपका ग्रुप है. तो जैसे जो पड़ोस वाली आंटी है, वो आप बाहर जाते हैं और पड़ोस वाली आंटी आपको रोक के पूछती हैं कि हाँ बेटा एग्जाम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही हैं. तो दैट इज़ योर सोशल स्पेस. अगर कोई मेट्रो में चलते हुए आपसे पूछे कि क्या आपके पास पानी है, आप पानी ले सकते हैं, दैट इज़ communication which happens in the public space. जो पड़ोस वाली आंटी ने आपसे पूछा कि आपकी क्लासेस कैसी चल रही है, that is communication which happens in the social space. All right, I don't see any more doubts. So we are going to end the class early today since we don't have time to start an entirely new topic. because हम खत्म नहीं कर पाएंगे इसको. So let's end the class and I'll meet you again tomorrow same time. And we are going to study speaking related topics. Like as I said कि communication के 4 parts होते हैं, reading, writing, listening and speaking. So tomorrow we are going to study writing and speaking related topics which are very important for exam. Okay, all right everybody. I'll see you tomorrow. Have a good day. Bye bye.